Hello, hello, hello. Hare Krishna. Hello, hello. Hey, hello, hello. Hare Krishna.
ಅಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಪ ಇರ್ಕೊಂಡು ಸಡನ್ ಈ ಬನಿಯನ್ ಪಯ್ಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय सुदर्शन चक्र की। Govindam Hari Purusham Tamaham Bhajami. Govindam Hari Purusham Tamaham Bhajami. Govindam Hari Purusham Tamaham Bhajami. Samasitam Buddha Sundaram Tandar Ako Vikamaniya Vishesha Shobha. Govindam Hari Purusham Tamaham Bhajami. Govindam Hari Purusham Tamaham Bhajami. Govindam Hari Purusham Tamaham Bhajami. Andani Yasa Sakalen Priya Priti Manti Vasyanti Vanti Dhayanti Chiranganti Ananda Chinmaya Sadhu Jala Vigrahasya. Govindam Hari Purusham Tamaham Bhajami. Govindam Hari Purusham Tamaham Bhajami. Govindam Hari Purusham Tamaham Bhajami. जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय सुदर्शन चक्र की। श्री निताय गौरचंद प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तमा बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित पावन हेतु तव अवतार।
মশাম পতিতা প্রভু ন পাইবে আরাম। মশাম পতিতা প্রভু ন পাইবে আরাম। আহা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখে। কৃপা বল কানা করো আমি বড় দুঃখী। আমি বড় দুঃখী। দয়া করো সীতাপতি অদ্বৈত গোসাই। অদ্বৈত গোসাই তব কৃপা বলে পায় চৈতন্য নিতায়। কৃপা বলে পায় চৈতন্য নিতায়। আহা স্বরূপ সনাতন রূপর গুণা। ভাট্য যুগ শ্রীজীবা প্রভু লোকনাথ। দয়া করো শ্রী আচার্য প্রভু শ্রীনিবাস। দয়া করো শ্রী আচার্য প্রভু শ্রীনিবাস। রামচন্দ্র संगमागे नरोत्तम दास। संगमागे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। संसारे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे राम राम हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, जय पंचातत्वा जय पंचातत्वा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। श्री श्री पंचतत्व भगवान की, श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन चक्र की, श्री श्री निताय गौर चंद्र की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। जय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपदा, जगद्गुरु शिला प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada Guru Puja ki. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadhguru. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Vandamai Savada Vandamai Savadan Bandamai Savadana Mate Bandamai Savadana Mate Jahara Prasade Jai He Baba Tariya Jai Prasade Mai He Baba Toriya Jai Krishna Prapti Hoy Jai Te 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 Guru Mukha Padma Vakya चित से करिया क्या गुरु मुख परमा वाक्या चित से करिया क्या और
Arana koriyo mane asha. Arana koriyo mane asha. Arana koriyo mane asha. Arana koriyo mane asha. Guru charane rati aise uttama gati. Guru charane rati aise uttama gati. Prasade pure sarvacha. Jai prasad pure sarva. Jai prasad pure sarvacha. Jai prasad pure sarva. Chakuran dilo jai janme janme prabhu se. 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 Divya gnan hriday prakashito. Divya gyan hriday prakashito. Divya gnan hriday prakashito. Divya gyan hriday prakashito. Prema bhakti jahate avijna vinasha jate. Prema bhakti jahate avijna vinasha jate. Vede gaye jahara charito. Vede gaye jahara charito. Vede gaye jahara charito. Shri Guru Karuna Sindhu Ajama Janara Bandhu. Karuna Sindhu Arama Janara Bandhu. Lokanath Lokera Jivana. Lokanath Lokera Jivana. Aha Prabhu Karo Daya Deha More Pada Chaya. Aha Prabhu Karadaya Deha More Pada Chaya. Aha Prabhu Karo Daya Deha More Pada Chaya. Aha Prabhu Karadaya Deha More Pada Chaya. He Vijay Gushu Tribhuvana. Vegas Gushuk Tribhuvana. He Vijay Gushu Tribhuvana. Vegas Gushuk Tribhuvana. Srila Prabhupada Patita Pavana. Prabhupada Charana. Srila Gurudev Lohilo Sharana. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. Srila Prabhupada Guru Puja ki Jom Vishvams Prabhu Chakra Sesha Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada ki Namachala Shri Das Thakur ki Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktavinda ki Jai Radha Krishna Govinda Shama Kundadak Nagri Govardhan ki Mathura Vrindavan Dham ki Maya Punardham ki Ganga Yamuna Mai ki Bhakti Dev Tulsi की समवेद गौर भक्तवृंद की हरिनाम संकीर्तन की हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की बृहद मृदंगा की श्री श्री निताय गौरचंद्र की श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामाई सुदर्शन चक्र की श्री 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 शिवराजापुर जगन्नाथ धाम की श्री श्री शिवराजापुर जगन्नाथ धाम वासीस की श्री श्री राधा दामोदर की दामोदर मास की गौर प्रेमानंदे all Guru's assembled devotees, all Guru's assembled devotees, all Guru's assembled devotees, all Guru Shishi Guru and Gauranga, Srila Prabhupada ki jai. Next we'll have Damodar Arati. Namamishwaram Sachidanandarupam Lasat Kundalam Gokule Vrajamana
यशोदाभियलोकलादवमानाम् परामृष्टमात्यन्ततो धृत्यगोप्या रुडान्तामुहुर्नेत्रयुग्मामृजान्ताम् कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रव्यं दामोदरं भक्तिबाधाम् इति दृक्स्वलीलाभैरानन्दकुन्दे सघोषं निमाजान्तमज्ञापयन्तम् तदीयेषिताग्नेषु भक्तर्जिता त्वां पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षां न मोक्षवदिं वा न चान्यं मृणेऽहं वरेशरपिह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बाला सदा मे मनस्य विराष्टङ्किमान्ये इदं ते मुखाम्बोजामत्यन्तनीलाय वृतां कुन्तलाय स्निग्धरक्तगोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विराष्टम् आलं लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि विष्ट्याति दिनं बतानो ग्रहाणे क्षमामाज्ञाम् एद्याक्षि दृश्याय कुबेरात्मजौ बाधामुच्चैव यद्वात् त्वयामुचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकं मे प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मे स्थिदामुदरेह नमस्ते स्तु धाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोद्धाराय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल श्री श्री राधा दामोदर की श्री यशोदा दामोदर की श्रील प्रभुपाद की श्रील गुरुदेव की जय निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। अगला कार्यक्रम होगा श्रीमद् भागवतम क्लास। सब लोग कृपया बैठ जाइए। नहीं होने वाला। हाँ बोलिए क्या क्या करना बोलो मैं भी रखूंगा भाई मेरा भी चेक हो गया कृष्णा आज चल रहा भाई
Shri 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 Jagannath Baldev Subhadra Mai Sudarshan Chakra ki, Srila Prabhupada ki. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yashodanandana Vrajajana Ranjana.
Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamunatiravanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Nitai Gaurango Nitai Gaurango Gaura Hari
Patita Pavana Gaurahari Jagannatha Baladeva Subhadramai Jaya Sudarshana Nitai Gaura Haribo 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 Shri Shri Shishirvada Madhava Ashtasakhi Vindaki Shri Shri Panchatattva Bhagavan Ki Shri Shri Prahlad Nrsingadeva Ki Shri 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 Jagannath Baldev Subhadramai Sudarshan Chakra Ki Shri Shri Nitai Gaura Chandra Ki all Gurus assembled devotees, all Gurus assembled devotees, all Gurus assembled devotees, all Guru Shri Shri Guru and Guranga Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. कितना लोग सिर्फ हिंदी समझता है? ऑटो उठाइए सिर्फ हिंदी ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬರೀ ಕನ್ನಡ कितने लोगों को हिंदी में क्लास चाहिए? कितने लोग ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡ? 1 2 3 4 5 6 okay. Kanay Prabhu, can you translate into Kannada? Huh? Okay. Vijay Prabhu. So you can't do? You can do simultaneously. No, speak in English. Okay. Hindi translation. So today morning reading from Srimad Bhagavatam Canto 3 Chapter 2 text number 16 in the matter of remembrance of Lord Shri Krishna. Mam Man khedayati etad ajasya janma mam khedayati etad adasya janma mam khedayati etad adasya janma vidambanam yad vasudevagehe vidambanam yad vasudevagehe vrajecha vaso ribhayad ivasvayam vrajecha vaso ribhayad ivasvayam Purad Vyavatsid Yadananta Viryaha Purad Vyavatsid Yad Ananta Viryaha.
मां खेदयति एतत् अधश्च जन्म मां खेदयति एतत् अजस्य जन्म विडम्बनं यद् वासुदेवगेहे विडम्बनं यद् वासुदेवगेहे व्रजे च वासोरी भयाद् इव स्वयं प्रजासे वासुदेव इव स्वयं पुराद्व्यवासीद् यद् अनन्तवीर्यः पुराद्व्यासति यत् अनन्तवीर्यः मां क्लेदयति एतत् अधश्च जन्म मां क्लेदयेतत् अजस्य जन्म विडम्बनं यद् वासुदेवगेहे विडम्बनं यद् वासुदेवगेहे व्रजे च वासोरी भयाद् इव स्वयं पुराद्व्यवत्सीद् यद् अनन्तवीर्यः अनन्तवीर्यः तत् च जन्म प्रेमपूर्ण माता जी आप परपट ट्रांसलेशन और परपट पढ़ सकती है हिंदी में। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद। जब मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए किस तरह वासुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से व्रज चले गए और वहां शत्रु के भय से प्रच्छन्न रहते रहे, तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए, ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। चूंकि भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, जिनसे सारी वस्तुएं सारे जीव उद्भूत हुए हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः जन्मादस्य यतः, अतएव उनके तुल्य या उनसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं हो सकती। श्री भगवान परम पूर्ण हैं। जब भी वे पुत्र, प्रतिद्वंदी या शत्रुवत अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं तो वे अपनी भूमिका इतनी पूर्णता से निभाते हैं कि उद्धव जैसे शुद्ध भक्त भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। उदाहरण है, उद्धव यह भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण नित्य विद्यमान रहते हैं और वे सदा के लिए कभी ना तो मर सकते हैं ना विलुप्त हो सकते हैं, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण के लिए शोक कर रहे थे। ये सारी घटनाएं उनके परम यश को पूर्णता प्रदान करने हेतु मानो पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। यह सब आनंद के लिए निमित्त है। जब पिता उन्हें नन्हे बेटे के साथ खेलता है और जमीन पर लेट जाता है मानो बेटे द्वारा पराजित हो गया हो, तो वह केवल उन्हें नन्हे बेटे को आनंद प्रदान करने हेतु हैं और कुछ भी नहीं। चूंकि भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, अतः वे जन्म, अजन्म, शक्ति तथा पराजय, भय तथा अभय जैसे विलोमों को समझित कर सकते हैं। एक शुद्ध भक्त भली भांति जानता है कि भगवान के लिए विरोधाभासों को समझित करना कैसे संभव है, किंतु वह उन अभक्तों के लिए शोक करता है जो भगवान के परम अंशों को ना जानते हुए उन्होंने इस काल्पनिक सोचते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऊपरी तौर पर अनेक विरोधी कथन पाए जाते हैं। वस्तुतः कुछ भी विरोधाभासी नहीं है। जब हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में समझ लेते हैं और अपूर्णताओं से युक्त अपने समान उन्हें नहीं मानते तो सब कुछ संभव हो जाता है। हरे कृष्णा।
Om Adgyanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Tatchilumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschata Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langayate girmit kripadamaham vande Shri Gurum Deenadarina Paramananda Madhava Shri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpatarabhyascha Kripasindhubhya eva cha patidanam pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Hare Krishna. So here in this chapter, there's a nice conversation happening between Uddhava and Vidura. तो इधर उद्धव और विदुर के बीच में एक वार्तालाप हो रहा है. This is very high subject matter for absorption. तो ये हमको दीर्घ से हम इसको आलोचन करना है. Because Uddhava is the greatest devotee of Krishna. उद्धव कृष्ण के बहुत उत्तम भक्त है. Can you just put up this amplifier down? So is somebody working? There's a lot of echo. So Vidura having a wonderful conversation with Uddhava here. तो विदुर और उद्धव के बीच में एक अद्भुत वार्तालाप हो रहा है. And if at all, if anybody is highly qualified to understand Krishna, is it Uddhava? तो अगर कृष्ण को समझने में किसी का योग्यता है तो वो है उद्धव. So Uddhava is trying to narrate that how his reflection on the Supreme Personality of Godhead, because he was in deep meditation when Vidura meets him and he starts inquiring about the Supreme Lord. तो जब विदुर जी उद्धव से मिलते हैं तब उद्धव भगवान के ध्यान में थे, दीर्घ ध्यान में थे और भगवान के बारे में वो आलोचन कर रहे थे. So Vidura, Uddhava started speaking. ಇಲ್ಲಿ somebody wanted in ಕನ್ನಡ, ಯಾರಿಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, maybe they understand English. ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So Uddhava is, when he was trying to narrate the Lord's activities, he is so astonished and bewildered. जब उद्धव भगवान की लीलाओं के बारे में बोल रहे थे, वो आश्चर्यचकित हो गए. There's a wonderful narration here in this conversation between Uddhava and Vidura. So Uddhava is trying to speak one by one about Krishna's wonderful power and potency.
तो जब विदुर उद्धव से पूछे भगवान के बारे में, तो उद्धव भगवान के एक एक गुण के बारे में, उनके अद्भुत गुणों के बारे में, एक एक गुण के बारे में वो बोल रहे हैं. Just imagine, the Supreme Lord is the Param Purush, ultimate, supreme energy of this whole cosmic creation. तो भगवान जो है वो परम पुरुष है, इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरे सृष्टि के वो परम पुरुष है. Now here, in this pastime, that he is acting like an ordinary child, लेकिन इधर हम देखते हैं कि भगवान एक साधारण बच्चे जैसे लीला कर रहे हैं. and it's so bewildering to Uddhava to even just to think about the Lord's pastime. तो सिर्फ ये सोचते ही उद्धव बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं. What is so bewildering to Uddhava here? तो उद्धव को क्या आश्चर्यचकित बना दिया? Just imagine the cause of all causes, and who is the creator of all created living beings, living and non-living. Everything is created by the Supreme Lord Krishna. सब कुछ जो है वो भगवान ने ही सृष्टि किया है, जो स्थिर है, अस्थिर है, सबका सृष्टिदाता है भगवान श्री कृष्ण. And here in front of Vasudeva, Krishna is just lying down as a baby, helpless, crying. लेकिन इधर देखते हैं कि भगवान वसुदेव का इधर एक छोटा बच्चा जो जैसे वो रो रहे हैं. And Vasudeva was fearful of Kamsa. और वसुदेव जो है वो कंसा से बहुत डरते थे. And this is a manifestation, and Krishna is playing also a wonderful part, that he is a helpless child for Vasudha and Devaki, and they were just fearful that Kamsa will just abduct this child and kill this child. और कृष्णा भी एक असहाय शिशु के जैसे बर्ताव कर रहे हैं. और जैसे जब कृष्ण एक असहाय शिशु के जैसे बर्ताव कर रहे हैं, तो वसुदेव और देवकी उसका कैसे रक्षा करना सोच के वो बहुत चिंतित हो गए थे. And so fearing Kamsa, Vasudeva is taking Krishna in the basket. All of us heard this pastime. तो कंसा के डर से वसुदेव कृष्णा को एक टोकरी में लेके जा रहे हैं. हम सब इस लीला को जानते हैं. And it's so raining so heavily, and he has to cross the river and he has to take it to Nanda Baba's palace. बहुत जोर से बारिश आ रहा है और भगवान कृष्णा को वसुदेव भगवान कृष्ण को नंदा के गोकुल में लेके जाना है. And on the way, what he does, he drops Krishna in the water when it's raining. और क्या हो गया, जब वो यमुना पार कर रहा था, कृष्णा फिसल कर पानी में गिर गया. कितना टेंशन. So for a father dropping a child in the water, it's like you can't comprehend. It's so fearful, right? Just what happened to a small baby. मतलब हम सोच सकते हैं, अगर एक पिता अपना शिशु हाथ से फिसल गया तो उसका क्या हाल होगा. वो इतना डर जाता है. And who is he dropping into water? लेकिन किसको वो पानी में गिरा रहा है? The Supreme Lord Krishna. भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण. And Krishna is also like a small baby, he's just enjoying this pastime. और कृष्ण भी इस लीला को बहुत आनंद से मजा ले रहे हैं. Like as if he is a helpless child under the hands of his father. वो एक बहुत असहाय शिशु जैसा अपने पिता के हाथ में. Then he just gets up, picks him up from the water, put him back on the basket, and he start walking to Nanda's palace. कृष्ण को पानी से उठा लिया और टोकरी में वापस डाला और नंदा के भवन के तरफ वो चलने लगा. When Uddhava is trying to think about this, he is so bewildered. He was feeling so anxious that how the Lord can do this. तो जब उद्धव इसके बारे में आलोचन कर रहे थे, तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए. भगवान कैसे ऐसा लीला कर सकते हैं.
that he is acting like a helpless child. एक असहाय शिशु जैसे वो लीला कर रहे हैं. Leave alone this, like, he manifested as a small infant, small baby. So Vasudev carried him in this basket and reached him to Nandabara's palace. तो भगवान एक असहाय शिशु जैसा मतलब पैदा होने का लीला किया और नंद बाबा के भवन में वसुदेव लेके गए. This is one side. एक तरफ है. The other side is that both Krishna and Balaram, the two supreme personality of Godhead, the supreme Lord, they are enacting a pastime. They are actually scared of their mama. और कृष्ण और बलराम ऐसा लीला कर रहे हैं कि वो कंसा से डर रहे हैं. And the parents are just always fearful every day. Oh, Kamsa will grab Krishna and Balaram, so we should protect him. तो उनके माँ बाप सोच रहे थे कंसा से हमको कृष्ण और बलराम को रक्षा देना है. So they are constantly thinking about Krishna. Nanda and Yashoda, they are constantly thinking about Krishna. How do we protect Krishna and Balaram from Kamsa? वो सदैव ये सोच रहे थे कि कैसे वो कृष्ण बलराम को कंसा से बचा के रखेंगे. And Krishna Balaram is enjoying this wonderful Leela. और कृष्ण बलराम जो है इस लीला को बहुत आनंद ले रहे हैं. As if they are helpless children, they are scared of their uncle. मतलब वो बहुत कंसा से बहुत डर रहे हैं, ऐसे वो लीला कर रहे हैं. So thinking about this, not that one day or 2 days, 24 hours, day and night, Nanda and Yashoda are just worried where Kamsa will come and grab and just take away Krishna and Balaram. तो 24 घंटे कृष्ण नंदा और यशोदा बहुत चिंतित थे. Anxiety is something else, no? Vyakulta. व्याकुल थे. So Uddhava is bewildered that what kind of the supreme personality of Godhead, that he is coming as an ordinary child and sitting in someone's lap as helpless baby. ये क्या भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान ऐसा लीला कर रहे हैं कि किसी की गोद में ऐसा असहाय शिशु जैसे वो बैठे हैं. So thinking about the Supreme Lord, because Uddhava is very close to the Supreme Lord Krishna, and when Vidura was asking speak something about the Lord, and he was recalling that all these things, and he was choking up. How can the Lord can do all this? तो जब विदुर जी कृष्ण के बारे में पूछे तो उद्धव ये सभी लीलाओं को याद करके वो गदगद हो रहे थे. And here Lord Krishna is so obedient and respectful for his father and parents. और हम देखते हैं कि कृष्ण कैसे वो अपने माता पिता का बहुत आदर करते थे. And here in order to protect themselves, Krishna and Balaram is living in Nanda Baba's palace, and Krishna and Balaram are just feeling so sorry that they are not in a position to save Vasudeva and Devaki. तो नंद बाबा के भवन में रहकर कृष्ण बलराम बहुत दुख अनुभव कर रहे थे कि उनके माता पिता वसुदेव और देवकी कारागृह में बहुत कष्ट भुगत रहे हैं. I am not in a position to serve you, my dear father and mother. मैं आपको सेवा नहीं कर पा रहा हूँ. So please forgive me. आप मुझे क्षमा कर दीजिए. Who is playing like this? कौन ऐसा प्रार्थना कर रहे थे? Supreme Lord Krishna. परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ऐसे उनके माँ बाप से वो प्रार्थना कर रहे हैं. So Uddhava is saying that whatever action the Supreme Lord does, he does it so perfectly, an ordinary living being cannot replicate that. तो भगवान जो भी लीला करते हैं वो बहुत उनका लीला जो है वो पूर्ण रहता है और कोई भी साधारण जीव इसको अनुकरण नहीं कर सकते हैं.
They're exactly doing that. Krishna and Balaram are exactly feeling that they're not in a position to serve their parents. They're feeling so restless and they're feeling so sad. ऐसा नहीं कि वो नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो उसको अनुभव कर रहे हैं कि कैसे वो अपने माता पिता का सेवा नहीं कर पा रहे हैं. So Srila Prabhupada is writing in the purport that how it is important that the parents need to be served, because Krishna is teaching us by example. तो इधर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कैसे बच्चे लोग जो है माता पिता का सेवा करना है, क्योंकि इधर भगवान हमको सिखा रहे हैं. And what we do that these days is very difficult to comprehend that nobody wants to take care of the parents, serve the parents. लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कोई भी माता पिता का देखभाल नहीं करना चाहते हैं, उनका सेवा नहीं करना चाहते हैं. The other side is that the parents also not in a good standing, a good example for the children to take care. और ये भी हम देखते हैं कि माँ बाप भी जो है वो अच्छा उदाहरण नहीं है बच्चों के लिए कि बच्चे उनका देखभाल करें. Because the children see that the parents are not being properly situated, they speak a lie, they get angry, they do all nonsense. Children see that they get bewildered. Oh, this guy is also doing the same thing. People outside also doing the same. Why should I respect them? Why should I take care of them? This is the thought process. तो बच्चे देखते हैं कि माँ बाप भी झूठ बोलते हैं, माँ बाप भी गुस्सा करते हैं, धोखा देते हैं. तो बच्चे सोचते हैं माँ बाप भी ऐसा कर रहे हैं, बाहर के लोग भी ऐसा कर रहे हैं, तो मैं क्यों उनका देखभाल करा, अनुकरण करूं, अनुसरण, आदर करूं. So like this, in this age of Kali, so much of contradiction. तो हम देखते हैं कि इस कलयुग में इतना सारा द्वंद्व है. But when the Lord sees in the relationship with the Lord and his devotees, there's no contradiction. लेकिन भगवान और भक्त के जो संबंध है उसमें द्वंद्वता नहीं है. Because Krishna is playing the perfect role of a Supreme Lord wherever it is required. Because in this Leela, Supreme Lord Krishna, even though it's a small child, he was killing one demon in the morning, one demon in the afternoon, one demon in the evening. तो कृष्ण एक छोटा बच्चा है, लेकिन हम देखते हैं कि सुबह में एक असुर को मारते थे, शाम को एक असुर, दोपहर को एक असुर को, शाम को एक असुर को मारते थे. As if we are walking an ant. किसी एक चींटी को मारने जैसे. And he is like just playing a part of a small kid. और एक छोटा बच्चा जैसा लीला कर रहे हैं. So just seeing this, Uddhava is getting overwhelmed. My God, I can't comprehend the power and potency of the Supreme Lord. तो उद्धव सोच रहे हैं ये क्या भगवान है, ऐसा लीला कर रहे हैं, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ. Because pure devotees can only understand the power and potency of the Lord. Because non-devotees can understand. They treat Krishna like an ordinary child. सिर्फ भक्त समझते हैं कि भगवान का क्या शक्ति है. साधारण लोग जो है वो भगवान कृष्ण को साधारण समझते हैं. Here Kamsa is also stating, so they said that the eighth child will kill you. So he was thinking that these children are ordinary children. So he was just worried that find all the children and kill them. तो कंसा भी सोच रहा था कि भगवान कृष्ण भी एक साधारण है. तो जब आकाशवाणी हुआ तब तो उन्होंने सोचा सभी बच्चों को मार डालो. And look at this illusion from Kamsa's point of view. मतलब हम देख सकते हैं कि कैसा माया का पर्दा पड़ा था कंसा के ऊपर. So he was also fearful of Krishna, that this child will come and just kill him. वो भी कृष्ण से डरता था कि वो आके उनको मार डालेगा. But here on the other side, Krishna is acting as if he is scared of Kamsa. लेकिन इधर हम देखते हैं कृष्ण ऐसा लीला कर रहे हैं कि वो कंसा से डर रहे हैं. You can't comprehend. Both the sides are fearing for the same people. मतलब दोनों, मतलब इधर कृष्ण लीला कर रहे हैं, लेकिन इधर वो सचमुच उसको कंसा कृष्ण से डर रहे हैं. दोनों डर रहे हैं. So Krishna is fearful of his uncle and Kamsa is fearful of the Supreme Lord Krishna. तो कृष्ण उनके मामा से डर रहे हैं और कृष्ण कंसा कृष्ण से डर रहे हैं. भतीजा ना, बांजा से डर रहे हैं. Can you just think about this? Is it in real life? क्या हम ऐसा हमारे जीवन में हम ऐसे सोच सकते हैं क्या? Only Lord, Supreme Lord can enact this pastime. सिर्फ भगवान ऐसा लीला कर सकते हैं. And just thinking about this Leela and thinking about this power,
Uddhava is going speechless. He is getting choked that I just can't describe the pastimes of the Supreme Lord. और सिर्फ इसको सोचते ही उद्धव गदगद हो रहे हैं, मैं कैसे भगवान का लीला का वर्णन करूं? Because Krishna's power and potency is so unlimited, no one can comprehend it so easily. मतलब कृष्णा का जो शक्ति है वो असीमित है, हम उसको सोच भी नहीं सकते हैं. Because people who are in distress, people who are in difficulty, what they do? तो जो दुख में रहते हैं वो क्या करते हैं? They immediately go to the Lord. वो भगवान के पास जाते हैं. So they stand in front of the Lord. भगवान के सामने खड़े होते हैं. Some people just stay and cry. और कुछ लोग भगवान के सामने खड़े होकर रोते हैं. Some people interact with the Lord just speaking about their problems. कुछ लोग भगवान के सामने अपने जो दुख है उसको वो बोलते हैं. And somebody just offer prayers to the Lord. कुछ लोग भगवान से प्रार्थना मतलब प्रार्थना समर्पित करता है. प्रार्थना समर्पित करते हैं. But the Lord, seeing that somebody is just in front of me with some difficulty and he is getting so anxious, how do I help this person? तो जब कोई भगवान के सामने आकर ऐसा प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, तो भगवान बहुत व्याकुल हो जाते हैं, मैं इस जीव को कैसे सहाय करूं? Because just imagine, Vasudev was carrying a small baby. He was in anxiety. Oh, this baby has to be, reached safely to the other place. तो जैसे वसुदेव जब कृष्णा को टोकरी में लेके जा रहे थे, वो बहुत व्याकुल थे कि कृष्णा को सही सलामत पहुंचाना है. Similarly, Lord is feeling that my children has come, my children is in difficulty. How do I help this children who has come to me? How do I help them? This is how Krishna thinks. तो उसी प्रकार भगवान भी सोचते हैं, मेरे बच्चे जो हैं मेरे सामने आकर वो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उनको कैसे सहाय करूं? बहुत व्याकुल हो जाते हैं. This is how the Lord actually thinks. भगवान ऐसे सोचते हैं. But what we do, the living entities, being in this material world, enamored by so many things, we don't want to go to Krishna, but we have difficulty. To forget the difficulty, we do so many other things to come out from this some suffering and the anxiety what we go through. लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान के सामने जाने के अलावा हम और किसी दूसरे चीजों में हम सांत्वना देखते हैं कि शायद वो चीज हम दुख से बाहर लेके आ जाएगा. What generally we do, we find somebody, either my relative or a friend, to keep talking about my problem. This is what तो हम happened to क्या me. करते हैं, हम कोई हमारा रिश्तेदार है, कोई हमारा दोस्त है, हम उनके साथ जाके हम हमारा जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बोलते रहते हैं. And this your friend or relative, or it is, how long you will hear the same thing? At some point in time, he said, if they start speaking, oh my God, this guy has come. I don't want to deal with him. तो अगर हम हमारा ही जो समस्या है उसके बारे में वही दोहराते रहेंगे, तो एक ना एक दिन उनको बहुत चिड़चिड़ हो जाता है. And you start giving all reasons, all excuses to avoid. He will not even open the door. वो दरवाजा भी नहीं खोलेगा. बोलो हम नहीं है. Tell him I'm not there. So that's how we react to the problems, but the Lord don't react like that. He is waiting. Somebody will come to my place and ask for help. I'm ready to offer help. लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, वो इंतजार करते हैं कि आओ, मेरे सामने आओ और तुम्हारा समस्या बताओ, मैं तुमको सहाय करने के लिए मैं तैयार हूँ. Because Krishna is explaining in so many places in Bhagavad Gita that if you take shelter of me, I'll give you whatever you want. भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, अगर तुम मेरे शरण में आओगे तो मैं तुमको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ. But we don't take that seriously. लेकिन हम उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं. My friend will say that I'll find a better job so that you'll feel happy. You will go there.
तो हमारा दोस्त है, बोलते हैं ये काम हाँ, नौकरी से तुमको और बेहतर नौकरी दिला दूंगा, तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं, because this is what happens in this material world. क्योंकि यही होता है इस भौतिक जगत में। Nobody like the bosses. किसी को बॉस पसंद नहीं, बस पसंद है किसी को बॉस? Any of you like your bosses? Love your bosses? We don't. You're fallen in love with your boss? But we don't like bosses. We always want to be bosses. So when you become boss, people below you will love you. हम मालिक को नहीं चाहते हैं, लेकिन हम मालिक बनना चाहते हैं। हम बॉस को नहीं चाहते हैं, लेकिन हम बॉस बनना चाहते हैं। तो अगर हम बॉस बन जाएगा तो जो हमारे नीचे है वो हमको चाहते हैं क्या? This is what is the illusion we are in. तो यही माया है। So Krishna is so bewildering from his power and potency. He's saying, come to me, I will give you what you want. लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो बोल रहे हैं, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं जो भी देने के लिए तैयार हूँ। Actually, you may think that, this is a farm just in a wood and, marble and stone. Krishna is Supreme Lord, and his holy names are equally powerful, or I would say, Krishna's names are more powerful than the Lord himself. तो हम देखते हैं ये क्या एक लकड़ी है, ये एक तो मार्बल है, ये क्या भगवान है क्या इसमें, हम सोच सकते हैं, लेकिन भगवान इसमें विराजमान है और लीला कर रहे हैं। What is it? I said the Lord's holy names are more powerful. और भगवान का नाम जो है वो भगवान से भी अधिकतर शक्तिशाली है। How many of you realize this? कितने लोग इसको अनुभव किया? Wonderful. We are all very fortunate. तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। Because we need not have to be Gajendra in an elephant's body. What is the power and potency of the Lord? Because, one will wonder how an elephant can call Lord's name. तो हम तो बहुत भाग्यशाली है, हम तो एक हाथी नहीं है गजेंद्र जैसा। गजेंद्र को भगवान को पुकार के कैसे भगवान इतना शक्तिशाली, ऐसा हमको सोचने का जरूरत नहीं है। Because our human intelligence is very less. क्योंकि हमारा जो बुद्धि है वो बहुत कम है। But we can't comprehend things beyond what we can see. जो देखते हैं उसी को हम समझ सकते हैं, उसके परे जो है हम उसको समझ नहीं पाते हैं। But then there's a nice life after life in the previous life and life after this life. We can't comprehend this. हम ये नहीं सोच सकते हैं कि कितना जन्म बीत गया है और कितना जन्म आने वाला है। So like this Gajendra, for thousands of years he was fighting crocodile in the waters. तो गजेंद्र जो है हजारों साल मगरमच्छ के साथ वो पानी में झगड़ा कर रहा था। And finally remembered, I can't just do things on my own. तो हजारों साल के बाद वो सोचने लगा, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। Then he remembered. उसके बाद वो भगवान को याद किया। Then he started calling Lord's name. फिर भगवान से प्रार्थना करने लगे, Hare Krishna, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So the Lord immediately appeared. तो भगवान तुरंत उधर दर्शन दे दिए। And he helped the Gajendra और appropriately. और गजेंद्र का सहायता किया। And the point is here, the whole. तो ये हम क्या समझना है इससे? What is the important thing here? Basic faith in the Lord. तो इधर हमको क्या सीखना का है? हमको भगवान से श्रद्धा रखना है। Because we believe in boss, we believe in the company, we believe in business, we believe in products, but we don't believe in the Lord. हमको भगवान के ऊपर विश्वास करना है। हम हमारे बॉस के ऊपर, हमारा कंपनी के ऊपर, हम भौतिकता की चीजों के ऊपर, सभी के ऊपर हम विश्वास रखते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। But Krishna is saying in Bhagavad Gita, in the 7th chapter, whatever you do, where you got the skills and ability, Krishna is saying,
I am ability in a man. तो भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं हम हमारे में जो क्षमता है वो हमको किधर से मिला है? वो क्षमता हमको भगवान से मिला है। भगवान बोल रहे हैं जो ह्यूमन मैन, I am an ability in a man. आदमी जो क्षमता रखता है वो मैं हूँ। So if somebody is maybe a software engineer, somebody is a successful businessman, somebody is a doctor, somebody is a wonderful surgeon, people are queuing up with him. He thinks that, I'm the best surgeon in the world. तो अगर कोई बहुत अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और कोई बड़ा अच्छा डॉक्टर है, वो सभी सोचते हैं ये मैं हूँ, मेरा वजह से, मतलब मैं अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मैं अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं अच्छा इंजीनियर हूँ, ऐसा वो सोचते हैं। Can such people can make one brain on their own? क्या ये लोग एक अपना मस्तिष्क को बना सकते हैं क्या? Like how we cook dal sabji in the kitchen, they can make something. जैसे हम दाल सब्जी बनाते हैं, क्या वो ऐसा मस्तिष्क बना सकते हैं क्या? We can't just comprehend this. We think that, I'm all powerful, I'm all intelligent, I can conquer the world. Till the time such person go to a doctor. हम सोचते हैं हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम ये कर सकते हैं और कर सकते हैं, जब तक हम डॉक्टर के पास जाने तक, Till the time we reach hospital. हॉस्पिटल जाने तक। Then everything in the world will stop. They'll saying that then if seeing the doctor, you will get more fearful because this fellow whether it's going to save me or kill me. डॉक्टर को देखते ही हमको और हम घबराते हैं। परिस्थिति अभी तो ऐसा ही है कि वो हमको जीवित रखेगा या मरण देगा, वो हमको यमा बन के आएगा। Jai Jagannath Swami ki. Jai. So 20-30 years back, doctor was a very revered profession. 20-25 साल के पहले डॉक्टर बोलेंगे तो हम उनको बहुत आदर करते थे। Not even 25, maybe 40 years back. 40 साल पहले भगवान मतलब डॉक्टर को हम बहुत आदर करते थे। Because they were genuine. क्योंकि वो सच्चे थे। But then the problem is that we all know within our own vicinity we see the so-called doctors, with due respect to those who are doctors who are in good standing, I'm not just demeaning them. Out of 5 years, that 4 years they don't go to college at all. तो हम देखते हैं डॉक्टर पढ़ाई के लिए बोलते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर क्या करते हैं, 5 साल में 4 साल कॉलेज नहीं जाते हैं। But his father has got so much money, he built a hospital and gave him, then he's become a doctor and you have to go get treated from him. लेकिन उनके पिताजी के पास इतना पैसा है, वो एक हॉस्पिटल बना के उसको बेटे को दे देते हैं और सोचिए हम उनके पास जाके इलाज करवाना है। Because you said that, oh, very nice hospital, nice facility, nice machinery, everything. But who's going to treat you? मतलब उसका हॉस्पिटल में जो चीज है सब कुछ अच्छा है, लेकिन व्यवस्था जो है वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन कौन ट्रीटमेंट देगा? जो 4 साल कॉलेज नहीं गया वो डॉक्टर हमको ट्रीटमेंट देगा। Sometimes you feel that more safe that some nurse is treating you. लेकिन हमको ऐसे सोचते हैं कि अगर कोई नर्स ट्रीटमेंट करेगी तो भी बेहतर है, मतलब उनके पास हमको थोड़ा विश्वास रहता है। हाँ, सेफ, सुरक्षित महसूस करते हैं। So this is very complex world. ये जगत जो है हम समझ नहीं पाते हैं। And here is Krishna. लेकिन here भगवान है, कृष्ण है। He's giving us this wonderful pastime that, I am there for you. भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ तुम्हारे लिए। Then all of you experience some days back, some months back, we never associate with the Lord in the form of holy names or temple. तो इधर बहुत सारे लोगों को ये अनुभव है कि कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले हम भगवान के साथ संग नहीं रखते थे। All we did is just start chanting the holy names of the Lord. And the Lord is reciprocating wonderfully. हमने क्या किया? भगवान का नाम स्मरण करना शुरू किया। And then भगवान का नाम स्मरण करते ही भगवान से आदान प्रदान होना शुरू हुआ। अनुभव है? And you think that yes, I am enjoying happiness. How happiness can come so easily? तो
भगवान का नाम स्मरण करते ही हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कैसे हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, So many, सोच रहे हैं ना? so many नहीं, years. सिर्फ माँ बोल रहे हैं, दूसरे लोग नहीं बोल रहे हैं, शायद उनको अभी अनुभव नहीं हुआ आनंद का। So many of us that we think that, you know, our abilities and I'm doing this, I'm happy. People who are working in the company they're saying, oh, 29th or 30th, last day, one day before the next month, I get my salary credited in my account. I'm happy. तो कंपनी में बोलते हैं 30 तारीख से एक दिन पहले हम मेरा सैलरी मेरा अकाउंट में आता है, तो मैं बहुत खुश हूँ। But then you're not talking about that happiness because it's only lasts for a couple of days. By first week, your salary gets over. क्योंकि पहला हफ्ते ही वो सैलरी खत्म हो जाएगा, Because you can't preserve it and keep it. हम उसको रक्षा नहीं कर पाएंगे। Because your wife is there at home. I'm not going to translate that. So we have all these challenges in front of us. तो ये सभी चुनौतियां हैं हमारे सामने। So people have such a transformation in our lives. We can experience just by associating with the Lord's holy names. सिर्फ भगवान के नाम के साथ संग रखने से हम देखते हैं कितना हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। But all we need to realize is that how powerful is this holy names that actually transform and change a stone-like heart, like person like me. तो हमको ये देखना है कि कैसे ये नाम जो है इतना शक्तिशाली है कि मेरा जैसा एक जड़ वस्तु को भी वो परिवर्तन किया है। How powerful the Supreme Lord shall be. तो भगवान कितना शक्तिशाली है, And to that Supreme Lord, I should surrender. और ऐसे भगवान का शरण मुझे लेना है। Not to the wife, not to the husbands, not to the children, not to the grandparents. पति का, पत्नी का, बच्चों का, उनका शरण में नहीं, किसका शरण में? How do you ऐसा think? नहीं कि उन लोगों का मतलब परिवार में सभी एक दूसरे का सेवा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो You have to don't make it misquote me. clear. I'm not teaching you wrong things. इधर हम अलग गलत चीज नहीं सिखा रहे हैं, But all I'm saying लेकिन that हमारा जो कर्तव्य है उसको तो करना ही है। that's what Prabhupada is saying, that we have to care for the parents. तो ये वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम माँ बाप का सेवा करना है। And why we should serve the parents? Because the parents are serving the Supreme Lord. माँ बाप का क्यों सेवा करना है? क्योंकि माँ बाप भगवान का सेवा कर रहे If the हैं। parents are serving their senses and doing sense gratification, do you feel like serving them? तो अगर माँ बाप इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे, भगवान का सेवा नहीं करेंगे, तो क्या हमें उनका सेवा करने का मन लगता है? No. So then it's our duty to somehow educate them. See, now you are not doing this, like how Prahlad Maharaj did. What Prahlad Maharaj did? तो अगर हमको ये ज्ञान है तो हमको क्या करना है? हम उनको सिखाना है, जैसे प्रहलाद महाराज क्या किया? His father is a famous personality. उनके प्रहलाद महाराज का पिता जो है वो बहुत मशहूर है। What is his name? उनका नाम क्या है? Mr. Hiranyakashipu. हिरण्यकशिपु महाशय। Very powerful. And he was बहुत बहुत शक्तिशाली। Prahlad Maharaj is 5-year-old boy and he's saying, look, dad, you are not an intelligent person, you're a fool. You don't know whom you're fighting with. You better surrender it to him and listen to what I say. तो हिरण्यकशिपु जो है वो बहुत शक्तिशाली है, और प्रहलाद महाराज जो है वो सिर्फ 5 साल का बच्चा है। वो क्या बोल रहा है? हे पिताजी, आप तो बहुत मूर्ख है, आपको ये पता नहीं है आप किसके साथ टकरा रहे हैं, तो आप मेरा बात सुनिए। But Hiranyakashipu is so foolish. Who the hell are you? You are my son, 5-year-old, you're trying to teach me? लेकिन हिरण्यकशिपु इतना मूर्ख था, वो क्या बोला? क्या तुम क्या समझते हो? तुम तो सिर्फ मेरा बेटे हो और सिर्फ 5 साल के हो, And you're trying to come and teach me? और क्या मुझे सिखा रहे हो क्या? हर माँ बाप ऐसा सोचते हैं ना। That's where the problem is. So the scriptures teach us that you don't go by the externals, that you don't see Krishna as a small baby. तो हम बाहर में जो है वो उसको नहीं देखना है, ये नहीं देखना है कि कृष्ण जो है वो एक छोटा सा बालक है।
And we can't just say, oh, Prahlad Maharaj is a small kid, what he knows. प्रहलाद महाराज जो है वो एक छोटा बालक है, उसको क्या पता है, ऐसा हम नहीं सोचना है. But like that, that there are so many small kids here. They're all fortunate. They are just taken birth in a Vaishnava family. They are just chanting and hearing the holy names of the Lord. They are much better blessed than all those who are grown up. They So not you- have an opportunity to chant the holy names of the Lord. तो इस तरह हम देखते हैं कि इतना सारा बच्चे लोग जो है इतना खुशकिस्मत है, बचपन से ही वो भगवान के नाम स्मरण कर रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, उनका वो भगवान के बारे में वो सुन रहे हैं. So like this, that we have to just not see with the, this material life. We should just see beyond that, what is happening around. तो सिर्फ हम भौतिकता के आंखों से नहीं देखना है, हम देखना है कि क्या हो रहा है, मतलब आध्यात्मिक ढंग से हमको देखना है. So how do you see that in transcendental vision? That by just chanting and hearing from the scripture, you get the transcendental vision, then you can see things as they are. तो हमको दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं और हम शास्त्र पढ़ते हैं, तब हमको ये सब समझ में आता है. Otherwise we can't comprehend. नहीं तो हम ये सब समझ नहीं पाते हैं. That's why we need to hear from these wonderful devotees of the Lord, like Uddhava. तो इसीलिए हमको उद्धव जैसे भक्त लोगों से हमको सुनना है. So all you need to do is read Srimad Bhagavatam and chant the holy names of the Lord. तो हमको क्या करना है? श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है और भगवान का नाम स्मरण करना है. Are you all ready to do that? क्या आप सब लोग तैयार हैं? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Jagannath Baldev Subhadra Mai Ji ki, Bhagavatam Grandharaj ki. Any questions? Any comments, reflections, please? Anubhav. किसी को कोई प्रश्न है? कुछ आप कुछ अनुभव इस मतलब इसके बाद आपका क्या अनुभव हुआ वो आप शेयर करना चाहते हैं? Yes. Give the mic to him. So my name is Gangadhar. Gangadhar. Yeah. Are you able to hear me? Yes, I can hear you. Okay. So nowadays the world is so automated or mechanical, and people are so angry on each other. Even when you are going on the road, when you're trying to cross the road, okay, and the police stopping the vehicles, still the guy is coming, moving the vehicle, okay. I've gone so much of, I don't know what to say, okay. So they become so much of impatient, No value for life. making money or whatever, okay. So faith in the God, or I don't know what. Yeah. Yeah, because you're right. Because the problem is that we are so engrossed in making our own living, even at the cost of somebody else. Because why RTAs are more in India? Because people are senseless. You don't find such RTAs in any other country. There is so many millions of people. And of all the population in the world, Indians are the best because they understand, they come from a rich culture. But then even though we are culturally supposed to be learned, we don't value the lives because we understand this is Krishna's creation, Lord's creation. But yet, when it comes to my sense gratification in front of me, I turn blind. I don't value. Unless it happens to our own family member, we don't just sit and crib about it. So what I see is basically people have become more selfish is what I see. Exactly. That's what I'm saying. Selfish and selfish to the core.
self-centered because, I have to get my things done. And after, this is what happens, many millionaires we see here, they, after getting and accumulating all the money, then they realize, oh, money is not all. We need to have some common connects with common people. I should be visible in the society and serve the society. This is what Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita is teaching us. Money is not all. But we turn blind because that we get allurement from so many ways. They're saying that, if you're saying Mr. Gangadhar is successful, oh, he's successful. He's driving a Mercedes-Benz. I'll also. So I'll go talk to him, just take advice. How do I buy a Mercedes-Benz? But we don't see that how we can actually lead a happy life. Because after buying all these things, and he said, oh, this is not happiness. That's what many of them come to the terms. But we don't follow that because this material world is built like that, an illusion. So that's what people can understand. That is why we need to educate people that this is not the real life or real happiness what we're looking for. Only when we associate with somebody who is supremely happy, when we associate with such person, we can really feel happy. People don't have time to hear to that because I'm busy even to do that. Thank you. Nice. So that is why Srila Prabhupada has come here, has given this knowledge. He so that even ordinary people can relate to Bhagavad Gita and can actually follow Bhagavad Gita in their life so that they can be happy. So we are very fortunate that we have Srila Prabhupada. So I'm closely associated with Om Prakash for many years now. So after 10 years, I had a opportunity to talk to him yesterday, and he invited me to come here to this, have darshan and take the lessons today. So I'm blessed here to be here today. Thank you for your wonderful. Lord has somehow called you, so you're blessed. So we can't comprehend this. It's not an accident. Yes. Like what you see in the road. This is not an accident. Correct. Because Lord has actually have a special privilege and he invited you. So me and my wife are here today. Your wife is here? Yeah. My children couldn't come. Where is she? Hare Krishna. Hare Krishna. What's your name, madam? What's your name, madam? My name is Mamata Ganga. Yeah. Thanks. Thanks for visiting our temple. You're already blessed and you will continue to be getting the blessings of the Lord if you regularly visit. Thank you. Any other questions? Comments? Yes. Prabhu Hare Krishna Mataji. Mataji हिंदी में बोलिए माताजी. Okay. एक रिफ्लेक्शन है और एक प्रश्न है. रिफ्लेक्शन है प्रभु जी, आपने क्लास में बोला कि अगर साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना हो गया, ब्रेन भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं. उतना भी नहीं, मुझे जो लगा था कि इतना वाटर स्कैसिटी है, सिंपल कंपाउंड लाइक H2O वो भी नहीं कर पा रहे हैं साइंटिस्ट. ब्रेन का भी अभी छोड़ दीजिए, बात की बात है, बट इवन वाटर नहीं जनरेट कर पा रहे हैं केमिकल से. So, what is the progression in science is what I realized. So the question that I had, the प्रश्न जो वो मुझे आया था, Gopis, Uddhava, Vasudeva, Yashoda Maiya are all Nitya Siddhas, right? So they are all eternal pastimes they do with Krishna. So how is that sometimes they are not able to realize it's the Supreme Lord, it's the little baby whom they are interacting with? How do we understand that? Prabhupada is giving a nice example, right? So it's like the father and the small child is playing, right? So the child sometimes, takes some thing, then, just fighting, hit the father. The father want to give a real reaction and just that excitement to the child. So what he does, when he just punches the father, immediately he falls down and saying, oh, he just acts like that. The child feeling so excited seeing this, right? There's a rasa in it. The child is feeling so happy. Seeing this child is enjoying, the father is also enjoying, right? It's not that one-sided. So like that, the Supreme Lord, he wants to enjoy some rasa with his chosen ones. He can't have, but the father, he can't have with the neighbor's kid, right? They feel that this guy is crazy. And he have the privilege because his own kid, he can do what he wants.
Prabhupada also give the example, you may be a high court judge, but at home, you'll be doing piggybacking, grandchild or child. So that's, that's a rasa. So Lord always wanted to be in that rasa of exchange, of loving exchange between the Lord and the devotees. So you get some pleasure. Jagannath Swami ki. You get great pleasure in having such pastimes with the Lord. So he chooses, because we say Hiranyakashipu is such a demon. But then Hiranyakashipu technically is one of his close associate. So you choose him, okay, you go in this Vesha, I will have this pastime. I'll come and I'll kill you, and you act as if you're getting killed from me. You can't just an ordinary guy. You get bewildered, what the Lord is doing. So Lord have actually choose his associates and the role what he wants to play accordingly, the right choices. When Lord Chaitanya came, when the Lord appeared as Lord Chaitanya, he also picked up his own associates who has to play what role. So the way we have to understand is they know that Krishna is the Supreme Lord, but in that situation, they are enjoying that rasa. No, sometimes, No. Krishna, by his power and potency, he removes that thought that, they are with Supreme Lord. Yogamaya potency. You forget like how Vasudeva, Nanda Baba and all those, Yashoda, she was just, Krishna get some stomach upset or something, she will get the best milk and she get that herb which mixed with that herb, the cow eats that and you get that milk. And it's like, treating a doctor treating a patient. Krishna is not a patient like you and me. But Yashoda was just feeling that, Krishna has to be treated for his illness. So like that, Krishna makes, he morphs, or is completely makes them forget that relationship of the Supreme. So if for 2 hours, if Krishna does not eat, she will feel so anxious. Oh, my son is going to become so weak. What's going to happen to him? And so she'll give a whole basket of sweets. Whenever you're hungry, you eat. Thank you, Prabhu. Thank you, Mataji. हरे कृष्णा है, हम हिंदी में बोले। तो प्रभु, मुझे भी फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा इंस्पायरिंग क्लास था, इंसाइटफुल क्लास था। प्रभु जो बोले, मैं आपका नाम भूल गया, आपने जो बताया, हाँ, उनका मैं पूरा सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि लोग मेटेरियली इतने ऊंचा उठते हैं, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे उनका समाज में स्थिति हो। लेकिन मैं अभी 3 हफ्ते से मैं बहुत देखा लोगों को, सब लेवल के लोग, चाहे वो देश के हों चाहे विदेश के, सब चाहते हैं कि खुश रहना है, लेकिन उनके पास समय नहीं है, उनके पास पता नहीं कि कैसे खुश रहते हैं। और सब एक रैट रेस जिसको बोलते हैं ना, चूहे की दौड़ में, उसमें वो करते जा रहे हैं कि और खुशी ढूंढना जा रहे हैं। और स्थिति ऐसा होता है कि मैंने देखा कुछ लोग यंग है, 30-35 साल के, 40 साल के, वो दुखित हैं। मैं उनसे जब बात किया तो दिख रहा है कि बिजी हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से दुख है। कुछ लोगों से मैंने देखा, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको या तो प्रोसेस पता नहीं है कि कैसे खुशी रहना चाहिए या खुश कैसे होना चाहिए, या गलत जगह ढूंढ रहे हैं वो खुश। तो मैं सोचा मैं भी वो अपना अनुभव शेयर करूं। Thank you, because that's what I also. No, I can't speak continuously like that. Let me just speak in Hindi. Maybe you can translate. So this is what actually is a missing point, right? So when I took up the Krishna conscious young, that I didn't retire like this, and I was working for the best companies in the world, and my objective was to help my colleagues, and I did. That the company where I worked for, the first salary, brightest of brains we will hire. Brightest of brain, we pay the best salary, and the first salary. Been seeing this. When they joined at 28, 30,
By the time they reach 40, they have all, blood pressure, blood sugar, whatnot, sugar. Dead. So that's why we need to be reaching out to them. And that's why I was there in the circuit for long. Rajina, at some point in time, it's enough. I can't just take this any longer. So we need to be there because everybody requires this opportunity. So we need to reach out to people and share because everybody is in the illusion. That yes, I'm using, you wearing this coat, you wear the, this tie, people does this, somebody is doing, you want to buy them. So you feel happy. How long? Till the time the next one, somebody does something differently. That's how, we are, leading a false life. Prabhupada is also saying that, that somebody, I have so much money, buy a Rolex watch. And they're like, we have 100 rupees also, the watch does the same time only, just indicates, right? So like that utility is the principle that, which is when you have an undisposable income beyond that, you don't know what to do. So they get into all these things. But if you have that, and if you have engaged in Krishna service, you are actually liberating from yourself from this repeated cycle of birth and death. Not only that, and you're also liberating the whole family by being a good example. People miss out that point. They think that, accumulation of money, wealth is all fine. And we have seen, and I've seen my father, he built a huge palace, big house, and, we never lived there because we got a job and the job took us elsewhere. He's saying, I built a house and he was attached to the house. And Prabhupada is saying, people who are attached to the house and attached to the money, they take birth as cockroaches in the, next life because, they're just worried about money. What lives in those lockers? Cockroaches also live. Because you're so attached, my money, my money. So you take birth as cockroach in next life. What's the point? Hare Krishna. मेरा एक छोटा सा अनुभव है तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे प्रभु कहें भगवान की शरण में आसने से, भगवान की नाम लेने से सब कुछ कष्ट दूर हो जाता है, आनंद हो जाता है। मेरा ये अनुभूति है। मैं कृष्ण भक्ति में आने से पहले बहुत भाग दौड़ ये सब करता था, मैं ये करूंगा वो करूंगा ऐसे सोचता था। लेकिन जब कृष्ण भक्ति में आया है, सिर्फ मेरा ही परिवर्तन नहीं हुआ, मेरे पूरा परिवार के नहीं हुआ, मेरा जो विस्तारित परिवार है, भाई बंधु सगा संबंधी, उनमें भी सभी में भी परिवर्तन हो गया। यहाँ पर मेरा बेटा भी बैठा है, मेरा भाई का भी बैठा है। मैं किसी को कोई जोर नहीं डाला, लेकिन उन्होंने सब कुछ देख करके उन्होंने इतने परिवर्तन हो गया। दुख तो नहीं है, लेकिन इतने आनंद में हैं। तो कभी कभी दिल से यही आता है, भगवान से और भक्तों के से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जितने दिन रहें इतनी ही कृपा रखना कि कहीं ये भक्तों से और भगवान से दूर न है। जितने दिन बचे रहे और जितने दिन रहे आप उन्हीं के साथ में जोड़ रखे, अपने साथ में जोड़ रखना। छोटा सा एक मेरा उदाहरण है। मेरा बॉस जैसे कह रहे थे कि तुम्हें ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, खुद का काम नहीं किया, मैं तेरा अभी 6 महीना के बाद तुम रिटायरमेंट जा रहे हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स बंद कर दूंगा, सैलरी बंद कर दूंगा। 3 दिन पहले की बात है, तुम जल्दी सुबह आना। मैं बोला, मैंने मन में सोचा है भगवान सब बंद कर दें, मैं तो जाऊंगा नहीं, अभी तो मेरी चैंटिंग खत्म करके जाऊंगा, वो जाऊंगा जब तक ऑफिस का टाइम शुरू हो जाता है। 3 बार बोला, मैं गया नहीं। कल बॉस का बॉस खुद ऑफिस में आए थे तो मेरे को बोला, इधर आओ, तुम ये काम नहीं करता है, तुम्हारा काम ये सब बंद हो जाएगा, तुम्हारा डॉक्यूमेंट लाओ। 1.5 घंटा उसने खुद बैठ के मेरे से कराया, खुद किया, मेरा काम कंप्लीट करके गया। मैंने भगवान को बोला कि थोड़ा सा तो याद ही किया था 3 दिन पहले तुम्हें, ये सभी बंद करने के लिए धमकी दे के गया था और आके खुद बोला करके खुद कंप्यूटर खोल के मेरा ही काम कर रहा है, सिग्नेचर कर रहा है, खुद प्रिंट कर रहा है, सबको कर रहा है। फिर बोलता है मनमोहन मैं अभी जा सकता हूँ। मैं भगवान को याद किया और इतने में गदगद हो गया कि कुछ भी हो जाए भगवान की शरण में सिर्फ जाना है, तो उससे जो हम लाइक नहीं है वो भी दे देते हैं। हरे कृष्ण। मैंने कुछ नहीं बोला, भगवान बंद कराना है तो बंद करा।
Online. Haribol. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Mataji, Dandot Pranams. Thanks for a great class. बहुत धन्यवाद क्लास के लिए. हम हमेशा बोलते हैं कि हमको पता है कि अगर एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र एक बार भी अगर करेंगे वो डिवोटी बन जाता है, मतलब वो डिवोटी क्वालिफाई हो गए हैं. इसका मतलब बहुत सारे लोग क्वालिफाई हो गए होंगे कि एक बार हरे कृष्ण महामंत्र तो बहुत बहुत लोग एक बार तो चैंट कर दिए होंगे. फिर हम कैसे उनको, मतलब अगर कुछ इरिटेटिंग चीज जो वो कर रहे हैं, अगर वो लोग वो कैसे बिना अपराध वो उनको कैसे हैंडल करना है. वो आप बोल रहे थे वो प्रहलाद भी ऐसा है. प्रहलाद हिरण्यकशिपु के साथ पेरेंट्स है, रिलेटिव्स है, अननोन पीपल है, बहुत सारे लोग एक बार तो चैंटिंग एक बार कर चुके होंगे. फिर उनको ये अगर मानेंगे तो डिवोटी मानेंगे तो उनको कैसे हम हैंडल करेंगे. how for example, if somebody just cuts a queue, we know is a devotee, how do we handle that person without committing aparad? Can you say that once more in English, please? I don't want to miss out. No, so we know that a lot of devotees are anybody who chants one round is a devotee. We know that. So then in that case, we shouldn't offend devotees also. So that includes that will mean a lot of people will qualify as devotees, including some relatives and parents. So which means that we really cannot offend anyone. So if somebody does something irritable, how do we control? How do we not offend? Like for example, let's say it's an unknown person who's in a queue, and we know the person is a devotee. They're having chanting bag in their hand, but for example, if they cut the queue and then they go in, how do we tell them? I mean, like politely, of course, they don't listen if we say. But how do we, without aparad, how do we tell people who all qualify as devotees just because they chant one round? How do we handle if they do something which causes some irritation? Thank you for a wonderful loaded question. So you need to understand this. Now, a small child is going to first standard. Okay. When the kid go to school, what did the child learn there? Alphabets, A, B, C, R, E, whatever, right? So when the child completes 1 year, do you consider the child is educated or uneducated? Do you consider the child as educated or uneducated? Yeah, yet to be. Yeah. Educated, right? Yes or no? Yet to be, yeah, child is yet to be educated. Yes, the child is educated. So every year there is an upgrade. Every year there is an upgrade. So it's upgrading its education from alphabets and in trying and putting various alphabets to form words, and subsequently learn to pronounce different words and form sentence like this as we keep growing. And we also have people who have gone through doctorate or professional education. We consider them also educated. But do you see a difference in that? Do you consider the first standard kid who is also educated to a doctor or an engineer or a PhD? They are also educated. But do you see there's a common sense here? We can't just say you are uneducated. They are educated. There is also educated. And also we say after education, after studies, the work what you do is nothing to do with the work. You are going to learn many things from there. So there is no way we can say that somebody is completely perfect, even in this material world. That is what you need to understand here, that somebody can act and I am educated, I am Krishna conscious. The Bhagavatam recognize who is a pure devotee or who is a devotee. Because there's a general amnesty given to people. Anybody who's coming to the temple, anybody chant the Lord's name, they are devotees. Because that requires also Lord's mercy. So we consider as devotee. But
we also need to recognize who's a pure devotee, who's a fixed up devotee, who's a Vaishnava devotee of the Lord. The Bhagavatam describes that. What it means, anybody who constantly chants and hears the holy name. Anybody, when he speaks, open his mouth, he's talking about the Lord and glories about the Lord or the Lord's devotees. But for this, he doesn't do anything else. So where do you classify your family members, relatives, your friends in the category? Is fill up the blanks for you. And one more thing, what we need to understand is that we always give the due respect. And when we understand what is their level, and if we are getting irritated, if we think that we are better placed, and if we are getting irritated, then it means that our knowledge also is not complete. So we need to understand, yes, they are talking like that because they are in ignorance. So there is no point in talking to an ignorant person. There is no point in getting irritated by an ignorant person. What does an intelligent person does? The intelligent person ignores the ignorant person. But if you consider yourself as an intelligent person, then you should not react or respond to that person. You just have to keep quiet, because even if you tell that person, because they are in ignorance, they are not able to understand and comprehend what you are going to tell them. So the best way is to just keep quiet. Tolerance is the word. Tolerate. So if we think that we are better placed, yes, we should not respond and react. Get out of that place. Go away from that place. See, now, intelligent means that you know how to act. Ignorant will react. Intelligent will not react, will be tolerant, because understanding this person is fool. So I can't just act and to react to this foolish statement. So why should I get disturbed? But if we react to that person's behavior, then we are also fools. In an indirect way, you're saying that I'm also in the same category. Not indirect, directly only. It is not indirect. You're saying that I'm also in the same category. Same time, no? You should also. Thank you, bro. If people are, when somebody is not in a position to understand that they have made a mistake, where's the question of rectification? I hope we got some indicators. Yeah, yes, Prabhu. Yes, Mataji. Thank you, Prabhu. Thank you, Mataji. Hare Krishna. It is depending on the realizations. Somebody may be chanting one round, but they may be very realized. Somebody may be chanting 16 rounds and for many years, and still they may be behaving like that. So it's all about the realization and how much, to what extent they're sincerely practicing Krishna consciousness. Yeah, to what extent they have overcome the ignorance. In Krishna consciousness, somebody is sincere and intelligent, they will not be putting their head, which means that they don't apply their mind. They will be following the instructions. That is what is the test. If somebody is nice devotee, they will not be using their mind and intelligence on their own. An intelligent person actually follows instruction, and in following and doing service, you will be using his intelligence, not thinking what I should do. This is what is the acid test. Thank you, bro. I presume that all of you are hungry. Let's stop here. So we have Damodar. We did. Damodar Arati we did, right? Yes, we did. Those who are not completed, please do. And others can go for Mahaprasad. Bhagavatam Gurundaraj ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Ananta Kodi Vaishnava Vrinda ki, Jai. Jagannath Baldev Subhadramai Sudarshan Chakra ki, Jai. Nitai Gaura Chandra ki, Jai. Damodar Mas ki, Jai. Gaura Premanande. हरे कृष्णा। प्रभु माता जी बहुत अच्छे से क्लास दिया है, सो इनके लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So फर्स्ट टाइम कौन कौन आ रहा है, थोड़ा आपका इंट्रोड्यूस कर दीजिए. My name is Gangadhar. So I come from Sarjapur Road. Yeah, I'm working for GE Medical Systems in Whitefield. I have a wife, Mamata, also here, and I have two kids, Tejas and Ojasvi. No, they're not. So my son is in 7th semester engineering, so he has his internals, and my daughter is in second PUC. She has midterm exams next week, so they couldn't join. Next time I'll bring them. Thanks a lot for the. Thanks to Om Prakash for bringing me here today. Although we have been associated with many years, but today, with Lord blessings of Krishna, I'm here with my family. Thanks, Guru. Big Hari Bol from Gangadhar Prabhu and family. Hari Bol. और कृष्णा प्रभु कुछ आए. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ನಿಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಕನಕಪುರ ರೋಡ್ ಕೋಣಕುಂಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ವಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. हरे कृष्णा. एनीवन एल्स? हरी बोल फॉर कृष्णा प्रभु. और फर्स्ट टाइम आ रहा है प्रभु माता जी. हरे कृष्णा. एनीवन कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम मितली सिन्हा है. मैं स्टेज कॉलेज से यहाँ रहता हूँ. हाँ हाँ, मैं बहुत दिन से आ रहा हूँ यहाँ. आज फर्स्ट डे. मितली सिन्हा. थैंक यू. मित्तल शीला माता जी की हरि बोल. और ये वार का दिनचर्या है, इवेंट्स है 18th अक्टूबर ट्यूसडे, अपीयरेंस ऑफ राधा कुंड, बहुलाष्टमी. हरि बोल. 21st अक्टूबर एकादशी. हरि बोल. So fasting time is 6:11 to 10:07. So कौन कौन फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? हमारा न्यू राजापुर जगन्नाथ धाम भगवत गीता क्लासेस फॉर यंगस्टर्स और सभी लोगों का, सभी एज ग्रुप्स को हम ऑफर कर रहे हैं फ्री में. सो ये प्रोग्राम अब कुछ ज्वाइन करने के लिए इच्छा है, मेरा संपर्क कर दीजिए. सो ನಾವು ಈ ನ್ಯೂ ರಾಜಾಪುರ ಜಗನ್ನಾಥ ಧಾಮದಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ತಿರುಗಿ ಸಂಜೆ 4:30 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. 4:30 8:30 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರ್ಯಾರು ದಾಮೋದರ ಆರತಿ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. हम प्रसाद लेने के पहले प्रसाद हम लेने का मंत्र बोलेंगे. सो मैं पहले बोलूंगा, आप मेरे बाद में बोलिए. महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे कल्प पुण्यवतम राजन विश्वासने वजायते शरीरारे विद्याजन जोड़ेन्द्रिय ताये काल जीव पहले विशेषागरे तारा मध्य जीवाति लोभो मोया सुधर्मति ताके चिता कठिन संसारे कृष्णा बड़ दयामय करी भरे जीवा जाय स्वप्रसादन दिलो भाई
से अन्नामृता पाओ। श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। प्रेम दाको श्री चैतन्य निताय। जय निमाय जय निताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई महाप्रसादम की गौरनिताई की जय। सो ओके, आप जाने के पहले 4 बार भगवान को परिक्रम करके बाद में प्रसाद लेने जाइए। ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 4 ಸತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. श्री जगन्नाथाष्टकम की। कदाचित कालिंदी तटविपिन संगीत करावो, मुदा विरी नारी वदन कमल स्वाद मधुपा। रमा शंभु ब्रह्म मरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवातु मे। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखी पिच्च कटिताटे, दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्ष विदधाते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवासति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवातु मे। महाम्बुधे स्थिरे कनकारुचिरे नीलशिखरे, वसन् प्रसादान्ता सहज बल भद्रेण बलिना। सुभद्र मध्यस्था सकलासुरासे वावसरादो, जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवातु मे। कृपा परवारा सजला जलाद श्रेणी रुचिरो, रमावणी रामा स्फुरद पंकेरुहमुखा। सुरेन्द्रराराध्य श्रुतिगानशिखा गीतचरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवातु मे। रथारूढ़ो गच्छन् पातिमीलिताभु देवपटलाय, स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकर्ण्य सदया। दया सिन्धुर्भ सकला जगतां सिन्धुसुताया, जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवातु मे। परम ब्रह्मा पीड़ा कुवलयदलो पुल्लनयनो, निवासी नीलाद्र निहिता चरणो नंत शिरासी। रसानंदी राधा सरसा वपु लिंगन सुखो, जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवातु मे। न वैयचे राज्यं न चकान काम नित्य विभावम्, न याचे हम रम्य सकला जनकायां वरवादुम्। सदा काले काले प्रामतापतिना गीतचरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवातु मे। हरत्वं संसारं धृततरमसार सुरपाते, हरत्वं पापानं विततिम् अपरां यादवपाते। अहो दिने नाते निहिता चरणो निश्चितमिदम्,
जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रायतः शुचि सर्व पापा विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। जगन्नाथाष्टकम की गोपी गीत की गोप्या ऊचुः जायति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रायत इंदिरा शाश्वतत्र हि दायित दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस् त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जातसत् सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनातते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदा विषजलाव्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वायुद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नान्दनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विकसनार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिदूर्यते चरणमीयुषां सांस्मृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहं वीरयोषितां निजजनस्मया द्वांसनस्मिता भज सखे भवात् किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं पणिपणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषुना कृन्दि हृच्छयं मधुरया गिरा वाल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरमोह्यतीर् अदरसीदुना प्याययस्वना तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविभिरीदितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविभिरीदितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना क्षोभयन्ति हि चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नातते पदं शिलतृणाङ्कुरै सीदतीतिना कलिलतामना कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर् वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर् मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं
शान्तमं च ते रमणनस्तने स्वार्पयादिहं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना चुष्टुचुम्बितम् इतर राघवे स्मारणं नृणा वितरवीरनस्ते अधामृतम् अटति यद्भवान् आहनिकाननं त्रुटियुगायते त्वाम् अपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षताम् पश्मकृत् पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यतेऽच्युतागता गतिविदस्तवोन् गीता मोहिता किटवयोषिता कस्य जन्निषि रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुराश्रियो वीक्ष्य दामते मुहुरटि स्पृहा मुह्यते मना व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाक्षनस् त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं सनेषु भीतः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यतते न किं स्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां न कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवत् आयुषां न। गोपी गीत की। श्री कार्तिक मास व्रत की, कार्तिक मास की, ऊर्जेश्वरी की, ऊर्जा प्रता की, ताई गौर सीतनाथ प्रेमानंदे।